Okay, can you see my screen? Yes, sir. Screen is visible. Okay, thank you. Okay, so yesterday we have seen some questions, right? Uh, like these questions, right? Okay. Uh, so any guesses like when we are going to start the automation? After front-end completion Okay, by the developer. okay, okay, रीटेस्टिंग के टाइम पे सर बार बार रीटेस्ट करना पड़ता है okay. Mm-hmm. Okay, that we will understand today only, right? What is the real-time process implementation for automation? Okay, we will take a simple example of Gmail. Okay, listen carefully now. Okay, now consider we have built one. Okay, we have built one which is for the Gmail login. Okay, which is for the login. And to check this functionality, you have written the test cases, for example, 10 test cases. Okay, now this is your build one. That means new functionality. That's why you have written the 10 test cases. Okay. Now after some days, you received build two. You received build two. Maybe that is a new functionality. For example, you can consider it as a compose mail. It will be compose mail. Okay. So again that you need some test cases, right? So consider for that you have written new 20 test cases. Okay. Okay. Now tell me what about these 10 test cases during build 2? Can you hear me? Yes, sir. यस सर Yeah, please give some answers, students. Sir, can you repeat? Okay, see, you got build one, okay? Fresh build, a new project. That was functionality was login. So you have written 10 test cases for it, okay? Now, after some time, like you got build 2, which is for the new functionality compose. So again, you have written 20 test cases for that functionality. Now, what about these 10 test cases? They will become prerequisite steps for build 2. Okay. Prerequisite steps means you are saying the steps will be already completed in these 20 steps. No, sir, they will be included in order to compose a mail. Hey, how we can say it? We are checking the login functionality, right? That means positive or negative test cases, right? For example, with invalid password, valid password, like that. But while while you are testing compose functionality, why you will again do the positive or negative for this login? You will just once log in, right? And then you will test the compose mail functionality in positive or negative way, right? But sir, while in automation, it will. No, I have not started any automation, friend. I'm just asking. This is all complete manual. Okay, sir. Manual, you have written manual 20 test cases.
Any answers? Any answers, dear? So what about these 10 test cases which we have written in previous build? Hmm? We should not execute them or what? Mm-hmm. Okay, no worries. Okay, now again after some days you got third build. Okay, you got third build, which may be again for some new functionality. Okay, some again new functionality. I'm just typing as a short form. Whatever maybe it will be new functionality. Now again to check that new functionality you have written 30 test cases and all it is about manual. Okay, there is no any automation started. The question itself is like when to start automation. Okay, now you have 20 test cases from previous build, that is build 2, right? And also the uh, same 10 test cases from build 1. What you will do then exactly means if you are joining in this third phase or in third build, so you have written 30 test cases, okay, but what about this previous build test cases? You will execute or you will not? Hey guys, please give answers. Sir, we'll only execute the positive scenario of previous builds. Positive scenarios, okay. Okay, consider all these are positive test cases. Okay, I am not considering any negative test cases, even writing for a fresh build. So these 10 test cases, these 20 test cases, all these are positive only. There is no single negative test case. Then We'll only use the required one. then how you will decide? All these are required, right? If you have written it by considering positive only, then all are required. We should retest them again. What is retesting? What is retesting? रिग्रेशन टेस्टिंग यूज करेंगे हम. ओके ओके, तो रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या होता है? एक वेब पार्ट पे दूसरे वेब पार्ट की डिपेंडेंसी है कि नहीं वो चेक करके. Okay. Okay. See, what is regression? Simply, existing functionality should not be affected because of new changes. Simple. Okay. That may be because of bug fixes or that may be because of new functionality. देखिए, आपको जब build 2 मिलता है तो डेवलपर उसको क्या करता है? ऑलरेडी build 1 का कोड भी उसमें होता ही है. लॉगिन का कोड होगा तो ही वो डेवलप करेगा नेक्स्ट कोड, कंपोज कोड, राइट? इट इज नॉट लाइक कि लॉगिन कोड को वो कुछ टच नहीं करेगा और वो सिंगली नेक्स्ट कंपोज का कोड बनेगा. ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना. इवन दैट कोड शुड हैव सम लॉजिकल लिंकिंग. सो बिल्ड 2 में वो क्या देता है एग्जैक्टली? आपको बिल्ड 1 और नया बिल्ड 2 का कोड कंबाइन करके देता है ना. That's why we have to test the previous build test cases as well completely. आपको ये 10 test cases भी execute करने ही पड़ेंगे. When you will receive the build 2, you have to first do the 20 test cases,
execution, then you have to check whether the login functionality is affected or not. There may be any defect or there may be not. अगर डिफेक्ट हो भी या नहीं भी, फिर भी आपको ये 10 टेस्ट केसेस बिल्ड वन से एग्जीक्यूट करने ही होंगे. दैट इज द व्हाट रिग्रेशन. नाउ नेक्स्ट, जब आपको थर्ड बिल्ड मिला है, ओके, यू हैव रिटन 30 न्यू टेस्ट केसेस ऑल पॉजिटिव, ओके, मान लीजिए. स्टिल यू हैव टू एग्जीक्यूट द 20 टेस्ट केसेस फ्रॉम बिल्ड 2 and 10 test cases from build 1. Okay, again after few days you got build 4. Okay, again it's a new functionality. Okay, again you have 40 test cases you have written. Okay, so I will just write down the number, the 30 test cases from previous build. Okay, again the 20 cases from build 2, and again the 10 tests from build 1. So this time you have to execute the 40 test cases. ये आपको करने ही पड़ेंगे न्यू फंक्शनलिटी के लिए, और ये 30, 20, 10 ये भी करने पड़ेंगे. Okay, now you can see after some time you are having more test cases in the regression phase only. मानते हो कि नहीं? मे बी न्यू फंक्शनलिटी के टेस्ट केसेस कम हो जाएंगे, नंबर में भी कम, मे बी डिफरेंट और लेस देन दी एडिशन ऑफ ऑल दिस टेस्ट केसेस विच वी आर परफॉर्मिंग अंडर रिग्रेशन. तो रिग्रेशन के अंडर जो भी टेस्ट केसेस है, राइट, उनका काउंट बढ़ जाएगा एक बार. सो डू यू थिंक लाइक अगेन if you will not do any automation, is it possible to complete all these test cases along with a new functionality? Can we go ahead and execute always the regression suite? ऐसा हो सकता है manually? No, sir. No, right? Because देखो यहाँ पे टेस्ट काउंट, टेस्ट केस का काउंट बढ़ते जाएगा हमेशा, क्योंकि प्रीवियस बिल्ड के टेस्ट केसेस ऐड होते जाएंगे और आपको न्यू फंक्शनलिटी टेस्ट केसेस भी लिखना है कोई ना कोई तो, राइट? सो यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल डू इज, अभी जो आपके रिग्रेशन के सूट है वॉट एवर इट में बी, यू विल ट्राई टू, what you will do, you will try to develop the automation script. Okay, for that you will try to develop, मतलब मान लीजिए build 4 के टाइम आप तो ये मैन्युअल एग्जीक्यूट कर रहे हो 30, 20 और 10, but you will try to develop the script for these previous existing builds 30, 20 and 10. इनके लिए बस डेवलप कर रहे हो, ओके, बट स्टिल इन बिल्ड 4 यू आर डूइंग इट मैन्युअली. फिर कुछ दिन के बाद आपके पास आएगा बिल्ड 5. ओके, अगेन इट विल हैव सम न्यू फंक्शनैलिटी, राइट? नाउ दिस टाइम you have written the 50 test cases manual, but this time you are ready with this 30 test cases automation script. Now going forward, अब यहाँ पे आप manually नहीं करोगे execution. Now for all these 60 test cases you have automation script and you will execute it, right? देखिए आपका टाइम बच जाएगा and effort will be also saved. Just this 60, okay? Anyway, for new functionality you have to execute manually only. You cannot do it by automation. फर्स्ट टेस्टिंग तो हमेशा कोई भी न्यू बिल्ड या प्रोजेक्ट में मैन्युअली ही होती है. वो प्रोजेक्ट कितना भी सिंपल हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वॉट एवर इट मे बी, ओके, इट डजंट मैटर. ओके, देन अगेन जब आपके पास बिल्ड 6 आएगा, व्हेन यू विल हैव द बिल्ड 6, व्हाट यू विल डू, अगेन आपके पास न्यू फंक्शनैलिटी होगी. मान लीजिए यू विल हैव द न्यू फंक्शनैलिटी, sorry, new functionality, and this time you have written new functionality test cases as a 60. So what is your task in this build then? आपको ये 50 टेस्ट केसेस के लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखनी होगी, एंड एनीवे आपके पास ये ऑलरेडी 60 टेस्ट केस के लिए एग्जीक्यूशन है, मतलब ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है. यू कैन एग्जीक्यूट दिस 60 टेस्ट केसेस डायरेक्टली, और आपका टास्क हुआ उस बिल्ड के लिए कि आपको 50 टेस्ट केसेस जो है इस बिल्ड से B5 से, उसके लिए भी क्या करना है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट डेवलप करना है.
गॉट इट? इस सिनेरियो में किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. Okay, so answer is when we start the automation in regression phase only, right? Or in which phase we will start the automation? So answer क्या होना चाहिए आपका इंटरव्यू के लिए? For the regression phase we will start the automation. Okay, न्यू बिल्ड के लिए हम जो भी टेस्ट केस लिख रही है इनका कभी भी ऑटोमेशन फर्स्ट टाइम पॉसिबल नहीं होता है. वी हैव टू एग्जीक्यूट देम मैन्युअली ओनली. Okay, then after some days we will try to develop and execute the script. Okay, next question is what is the precondition for the automation? बताइए, अब ऑटोमेशन मुझे स्टार्ट करना है. ओके ओके, सो व्हाट इज द प्रीकंडीशन फॉर दैट? क्या रिक्वायर्ड है ऑटोमेशन के लिए? बिल्ड वर्ड रेडी होना चाहिए. बिल्ड रेडी होना चाहिए. ओके टेस्ट केसेस. Previous test cases. ओके, टेस्ट केसेस. ओके, और अगेन बिल्ड वन कंप्लीट होना चाहिए. ओके, बिल्ड. ओके, अगेन ऑटोमेशन का पूरा एनवायरनमेंट सेटअप होना चाहिए. ओके, एनवायरनमेंट सेटअप. ओके, अगेन okay. To start with automation we required mainly two things. First one is the manual test cases which we have already written, right? And second we need the application itself. ये दोनों चीजें कंपलसरी होनी चाहिए. ओके, and that application should be stable. What do you mean by stable application? What is stable application? वर्किंग. properly. Working. Okay, Having zero bugs. having zero. So discuss Zero defects. Okay, having zero defect. Again. जिसका स्मोक टेस्ट पास हुआ होगा. Okay. Okay, see, application stable मतलब क्या चाहिए आपको? Simply the application should have minimum bugs or it should be defect free, but in actual we cannot say there are zero defect, right? मान लीजिए आपके build 4 में आपने कुछ defect raise की है, developer is trying to fix it. So we cannot say the currently your build 4 has zero defect. मान लीजिए कुछ defect होंगे, but that should be very minimum. Okay, that is the first condition. So we can say application is stable. Second thing है आपका test cases. Now test cases तो आपके पास build 1 से है. You have this test cases, so you have not started automation here. आपके पास यहाँ पे भी test case थे, but still you have not started here, right? So after some time you will have number of test cases under the regression suite, and that time you have decided to start automation. Why? Because your test cases were freezed. What do you mean by test cases were freezed? फाइनलाइज. Finalize. Very good. देखिए आपके टेस्ट केसेस फ्रीज होने चाहिए, मतलब आपके टेस्ट द स्टेप्स है वो फाइनलाइज होने चाहिए. ओके, वाई? बिकॉज सी यहाँ पर अगर आपके 40 टेस्ट केसेस है मान लीजिए. ओके, वी हैव वन टेस्ट केसेस इन दैट. देयर इज वन टेस्ट केस. ओके, which has 8 steps or sorry 5 steps. मान लीजिए you have started automation, you have completed automation. अब उसके बाद उसमें कुछ इश्यू आए या कुछ बग फिक्स हुए तो उसके सेम उसने स्टेप्स 8 कर दिए. ओके, he has added, the QA people has added more 8 steps. ओके, आपने क्या कर दिया? फिर भी उस 3 स्टेप का क्या कर दिया? ऑटोमेशन स्क्रिप्ट डेवलप कर दिया. नो वरीज. अगेन आफ्टर सम टाइम्स
or some days he added 2 more steps, so it become 10 steps now. Okay, so again you have to you have to develop the script for 2 steps, right? बट डेफिनेटली ये स्टेप का कुछ सिग्निफिकेंस या इम्पैक्ट नेक्स्ट केस में भी हो सकता है. सो यू मे फाइंड देर इज मोर डिस्टर्बेंस इन दी रिमेनिंग ऑटोमेशन स्क्रिप्ट. So that's why the requirement is what आपके टेस्ट केस फाइनलाइज होने चाहिए. That means there should be again any no addition or subtraction of the test case. Okay. So what is the precondition for the automation? First, automation मतलब automation start करने के लिए definitely the environment setup, software, tool, language, browser. These are the requirements for automation. But the first prerequisites मतलब आपको स्टार्ट करना है ऑटोमेशन, उसके पहले क्या चाहिए? ओके, बेसिकली यू नीड द टेस्ट केसेस विच आर फ्रीज्ड और फाइनलाइज्ड, and then you need the application which is stable. Stable means again there should be having minimum defects. There should be having minimum defects in that application. Okay, ये दो क्वेश्चन क्लियर हुए आपको? Any doubt in this? When we start the automation during regression phase. Okay, thank you. Okay, now what is the precondition to start the automation? That is, you should have the application and the test cases. Okay, got it? इसमें कोई doubt है? Okay, now how this tool is getting selected in real time? अब हमको टूल सिलेक्ट करना है ना ऑटोमेशन का. So any guesses how we are going to select the tool for automation? Based on application. Okay. Okay, again. Based on time taken by automation tool to run the script. And how we will decide it? हमारे पास एप्लीकेशन है. ओके, मान लीजिए हमारे पास टेस्ट केसेस भी है. देन फिर आप टूल कैसे सिलेक्ट करोगे? ये चॉइस ऑफ सेलेनियम, राइट? ये चॉइस ऑफ सेलेनियम, ये चॉइस ऑफ QTP. Okay, you have choice of UFT. There are different tools, right? Test layer. Okay, how you are going to select the automation tool out of multiple choices? On the basis of requirements. Okay, but okay, you have requirements, so how you will define? You have already the requirement, you have already generated the test cases for that requirement. अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि उस रिक्वायरमेंट के अनुसार ये सेलेनियम या QTP लेना है? तो उनका कंपैरिजन देखेंगे कि वो कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग में कितना जाता है, मतलब कौन से डिफरेंट एनवायरनमेंट मतलब ब्राउजर्स के साथ वर्क कर सकता है या नहीं. Yeah, good. So how we will do that comparison? उनके डॉक्यूमेंटेशन में फीचर्स होंगे ना सर कि कर सकता है या फिर. Okay, no, see, देखिए डेफिनेटली दे हैव टू ट्राई ऑल दी टूल्स, और वहाँ पे कोई फीचर होंगे तो वो फीचर से हम जज नहीं कर सकते कि हमारे टेस्ट केस वहाँ पे पास हो रहे हैं कि नहीं. सिंपली व्हाट दे विल टेक, दे विल सिलेक्ट सम सैंपल टेस्ट केसेस. मान लीजिए 25 टेस्ट केसेस उन्होंने सिलेक्ट किए, एंड दे विल यूज ईच एंड एवरी टूल. ओके, जितने भी उनके सजेशन टूल थे, sorry, they will try to use each and every tool just for 25 test cases. मान लीजिए आपके रिग्रेशन में 1000-2000 टेस्ट केस है. Out of that they will pick some 25 test cases and they will try to automate with each and every tool. After that, जब वो हर टूल के साथ ऑटोमेशन कर लेंगे, then they will create one POC. What is POC पता है?
अगर आप मेल में यूज कर रहे हो POC तो उसका मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, हियर आई एम सेइंग POC मीन्स प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इस टूल के बारे में आपको जो POC आप प्रेजेंट कर रहे हो तो इसके फीचर्स क्या है ना, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस, ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इट मे बी प्रेजेंटेशन. ये आप नहीं देते हो, ये आपके बिजनेस पीपल के लिए आपके टेस्ट लीड देंगे. ओके, अलॉन्ग विद द ऑटोमेशन टीम. Similarly for QTP also, and in a project or in we can say company, they have like all different automation tester. Okay, कि ऐसा नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट बस उनके सभी प्रोजेक्ट सेलेनियम में चल रहे हैं. उनका कोई प्रोजेक्ट QTP में हो सकता है, कोई UFT में हो सकता है, राइट. सो दैट्स वाई वहां से जो भी SMEs है, सब मतलब जो भी उस टूल के अच्छे नॉलेज वाले पर्सन है, उनसे वो क्या करेंगे, कुछ टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर लेंगे, एंड ईच ऑफ देम विल प्रोवाइड यू दी POC, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. अब उस प्रूफ ऑफ कंसेप्ट में वो सब बताएंगे कि व्हाट वाज द टूल, व्हाट वाज द लैंग्वेज, व्हाट वाज द चैलेंज, राइट, एंड व्हाट इज द एडवांटेजेस. ये सभी वो एक्सप्लेन करेंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे. ओके, देन द बिजनेस, मतलब जो क्लाइंट है, the business will go through that report and then they will finalize accordingly a tool. Again, simply one important is cost also there, because कुछ टूल आपके फ्री होंगे या ओपन सोर्स रहेंगे. या स्क्रीन विजिबल नहीं है? give me a minute. Okay, let me share again. अभी दिख रहा है स्क्रीन? Yes. Yes, sir. Okay, thank you. So I have written like what they will try to give in that report: cost, which tool they have used, which language they are going to use for that development, वहाँ पे challenges क्या है, उसके advantage क्या है, right? ऐसा एक report बनाएंगे वो. And at the end they are going to finalize with business, test lead, है ना, और टेस्ट मैनेजर. ये सभी क्या होंगे? सॉरी, टेस्ट मैनेजर. All these people will have a formal meeting to decide or finalize the tool itself. Okay, and consider they will finalize any tool like Selenium, QTP or UFT, whatever it may be. It depends upon business requirement only. बिजनेस रिक्वायरमेंट मतलब देखो, बिजनेस के पास कॉस्ट का कंसेंट है तो डेफिनेटली दे विल पिक द सेलेनियम POC. Okay, if they have like banking project or any confidential project and they don't want their project to be done on the open platform like Selenium, so they may ask for other tool which is having some license, है ना. जिस टूल के लिए लाइसेंस है, प्रोटेक्टेड है, सिक्योरिटी है, उस टूल को भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस रिक्वायरमेंट. So ये क्वेश्चन क्लियर है, हाउ टू सिलेक्ट ऑटोमेशन टूल? सर POC के बाद से वापस एक बार एक्सप्लेन कीजिए. ओके, श्योर. देखो, POC मतलब क्या होता है? प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. फॉर गिवन एनी टूल दे हैव टू प्रिपेयर इंडिविजुअल POC. POC ये सभी का नहीं होगा. मतलब सेलेनियम के लिए एक POC होगा जो सेलेनियम का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जिसको हम कहते हैं SME, है ना, जिसको सेलेनियम अच्छे से आता है, जिसका कमांड है उस टूल पे, तो वो क्या करेंगे, एक POC बनाएंगे. उस POC में वो क्या ऐड करेंगे, तो अगर सेलेनियम के टूल से रिलेटेड कुछ कॉस्ट बियर करना है हमको प्रोजेक्ट में, तो वो कॉस्ट जस्टिफाई करेंगे. उस टूल के बारे में एक जनरल ओवरव्यू देंगे. देन विच लैंग्वेज वी आर यूजिंग फॉर दैट टूल. अल्टीमेटली हमको जब टेस्ट स्क्रिप्ट डेवलप करना है तो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, राइट. तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस. मान लीजिए कि कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि सेलेनियम में मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी हम QTP की तरह मेंटेन नहीं कर सकते सेंट्रलाइज, राइट. सो व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड दैट यू विल मेंशन. Also, what are the advantages? Maybe it is like
ओपन सोर्स टूल और उसमें जो भी एडवांटेज है टेक्निकली दैट यू कैन एक्सप्लेन एंड यू विल मेक अ फाइनलाइज रिपोर्ट ऑन दैट, राइट। और वो रिपोर्ट देखने के बाद फॉर्मल मीटिंग होगी किसमें, बिजनेस पीपल मतलब क्लाइंट, टेस्ट लीड एंड द टेस्ट मैनेजर, and then they will finalize the tool on which we have to complete our project. Not this only 25 टेस्ट केसेस, जो भी रिमेनिंग टेस्ट केसेस या रिग्रेशन सूट है अपना उसको कंप्लीट करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए वो टूल वो फाइनलाइज करेंगे। हियर एनी डाउट? No, sir. Okay. Okay, so this is the concept of what, how, like when we have to start the automation for the regression, what are the prerequisite or precondition to start automation, and exactly how we are going to finalize the automation tool. Okay, so यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, मान लीजिए। Now we have finalized the tool as Selenium, right? Any doubt in this? We are going to learn the Selenium tool out of this, okay, as part of our this course. Now yesterday I told you what is Selenium. Yeah. Yes, Selenium is an User interface with different components. okay, very good. API. Selenium is an API with different components, right? Okay. So what the first component I told you? Selenium ID. Selenium ID. Okay. Then RC. okay. Then Grids. Selenium WebDriver. good. Then Selenium grid. Okay. Selenium Selenium Grid. Grid. Yeah. Selenium grid. Okay. These are the 4 components of your Selenium till date. Okay. Now we will discuss one by one. Okay. So do you know when Selenium is launched in market? Okay. See, Selenium is launched in 2004. Okay. तो जैसे ही उसका फर्स्ट लॉन्च होगा तो वी विल नॉट गेट ऑल द फीचर्स, है ना। उसका एक बेसिक वर्जन या जो भी हो, फर्स्ट वर्जन जिसको हम कहते हैं, दैट वाज देयर, राइट। तो उसको सेलेनियम आईडी या उसको सेलेनियम 1.0 भी कहा जाता है, राइट। दिस इज जस्ट वर्जन नेम। नेक्स्ट, अब आईडी में क्या होता था, इट्स जस्ट अ थर्ड पार्टी टूल। जैसे मान लीजिए कि आपका ब्राउजर है ना। ब्राउजर में देखो आप कुछ टूल ऐड करते हो, जैसे कि एड ब्लॉकर। आपको अगर कंटिन्यूस ऐड आ रहे हैं तो आप क्रोम मार्केट से कोई टूल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करते हो, राइट। जस्ट कि वो क्या करेगा, आपके साइट्स के जितने भी एड्स आ रहे हैं उनको क्या करेगा, वो ब्लॉक करेगा। तो सिमिलर इन दैट फैशन दिस वाज अ जस्ट थर्ड पार्टी टूल। ओके, एक एड इन था ये, इट वाज जस्ट एन एड इन। और वो क्या करता था, दैट मीन्स इट इज जस्ट हैविंग दी रिकॉर्ड एंड प्ले फंक्शन। व्हाट इज रिकॉर्ड एंड प्ले फंक्शन, समझ लीजिए। क्या होता है रिकॉर्ड एंड प्ले फंक्शन में, मान लीजिए यू हैव एन एप्लीकेशन, ओके, यू हैव एप्लीकेशन एज अ फ्लिपकार्ट, यू वांट टू टेस्ट। तो आप क्या करोगे, उस टूल को करोगे स्टार्ट, उस टूल को करोगे स्टार्ट, जैसे हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं मोबाइल में, एंड यू विल गो टू द लॉगिन, क्लिक ऑन लॉगिन, again you will get this field, you will try to give some input number in that, and you will get an, you will click on request OTP, okay, and simply you will log in, and again there is a कोई बटन होगा तो आप लॉग आउट कर दोगे, and again you will stop that recording। मान लीजिए you will stop that recording। so what it will give you, it will give you some code, जो भी आपने एक्टिविटी किया है ना उसका अल्टीमेटली एक पीस ऑफ कोड बन जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट टाइम आपको जब भी उसका ऑटोमेशन करना है या उसको आपको यूज करना है तो यू विल जस्ट
go and play that. It's just like video. It's just like video. मीन्स आपने कुछ एक्टिविटी की है. एग्जाम्पल आपका मोबाइल ले लीजिए, आपने मोबाइल में कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है या फिर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की. यू हैव स्टार्टेड, यू हैव टेकन टाइम, यू हैव स्टॉप्ड इट. Is there a way can you go and change that recording again without using any third party tool? Can you change it? No, right? आपको बस वो वीडियो क्या कर सकते हो आप? Again you can play it जब भी आपको चाहिए, but you cannot edit it or you cannot change it. So that is the same disadvantage of this ID version. इसमें आप क्या कर रहे थे? रिकॉर्ड कर रहे थे एंड प्ले कर रहे थे, बट वहां पे डिसएडवांटेज क्या है? देयर वॉज नो स्कोप फॉर द प्रोग्रामिंग, ताकि मैं वो कोड चेंज नहीं कर सकता हूँ. वॉट एवर आई एम गेटिंग द कोड आफ्टर रिकॉर्ड एंड प्ले, वो कोड को मैं बस वापस यूज कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट डू द चेंजेस वाया प्रोग्रामिंग. सो अल्टीमेटली इसकी पब्लिसिटी कम हो जाएगी, मीन्स पीपल विल नॉट यूज दैट मोर. देन दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द आरसी. Okay, Selenium RC. So this is also called as a Selenium 2.0. Now what is in this? The Selenium RC means remote control. Okay, Selenium RC is what? The remote control. Here they have given the advantage. Okay, you can do the programming. जो प्रीवियस वर्जन का डिसएडवांटेज था आपका, वो यहाँ पे उन्होंने उसको एडवांटेज बना दिया कि आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो by using the programming language like Java, Python. Okay, but again here they have given, or we faced one disadvantage as client and server. What is client and server? Any guesses what is client and server? Mm-hmm. Client is any hardware device which receives services from the server. Very good. And what is server? Server is any hardware device which provides services to different clients. Very good. Or it may be remotely placed also. Okay. देखो क्लाइंट और सर्वर का कंसेप्ट आपको हर जगह पे आएगा. ओके, सो मेक इट क्लियर कि आपको ये इजीली बताना है इंटरव्यू में भी. इट्स नॉट कि आपको एपीआई में ही क्वेश्चन आएगा. यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन इन जनरलाइज वे आल्सो. ओके, सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि क्लाइंट और सर्वर ये यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है. सो आई विल टेल यू हाउ इट वाज अ डिसएडवांटेज. देखिए, मान लीजिए एग्जैक्टली यहाँ पे क्लाइंट एक था ब्राउजर. ब्राउजर हो सकता है कि नहीं क्लाइंट? Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay. And server is also one type of I can say browser, जहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है. मान लीजिए उस ब्राउजर पे सब इंफॉर्मेशन सेव हो. Just consider like client is also here browser and server is also here browser. Okay. अब मुझे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखना था थ्रू प्रोग्रामिंग, जो इसका एडवांटेज है. तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा था मुझे? क्लाइंट और सर्वर है तो मुझे क्या करना पड़ा था? थ्रू प्रोग्रामिंग आई शुड स्टार्ट दी क्लाइंट सर्वर, सॉरी क्लाइंट. ओके, मुझे क्लाइंट को स्टार्ट करने के लिए एक कोड लिखना था. ओके, सिमिलरली मुझे ब्राउजर को स्टार्ट करने के लिए भी एक कोड लिखना था. मैंने दोनों को स्टार्ट किया. जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, फर्स्ट स्टेप लॉन्च द ब्राउजर, है ना. हम जो ऑटोमेशन मैनुअल में स्क्रिप्ट लिखते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप लिखते हैं लॉन्च द ब्राउजर, हिट द यूआरएल. तो ब्राउजर को स्टार्ट करने के लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा. वही मैं कोड बोल रहा हूँ, दिस वन. लाइक टू स्टार्ट द क्लाइंट, मतलब एक ब्राउजर है, उसको स्टार्ट करने के लिए मुझे कोड लिखना पड़ा थ्रू प्रोग्रामिंग. ओके, अगेन सर्वर को भी स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की एक्सचेंज होगा. ओके, आफ्टर सम टाइम वो मेरी टेस्ट केस खत्म हो गई है, तो आई नीड टू स्टॉप दैट क्लाइंट. जैसे कि हम बोलते क्लोज ब्राउजर, तो इंस्टेड ऑफ क्लोज यहाँ पे मुझे स्टॉप करना था उसको. एंड हियर ऑल्सो आई नीड टू मेक अ कोड फॉर स्टॉप द सर्वर. So now this is not one
लाइक वन टाइम एक्टिविटी। अब ये एक टाइम नहीं होगा दोस्त, आपको एक टेस्ट केस करनी है तो उसको एक बार स्टार्ट स्टॉप, एक बार स्टार्ट और स्टॉप करना पड़ेगा। बट इफ यू हैव थाउजेंड ऑफ टेस्ट केसेस इन रिग्रेशन, so you will have to do every time the start and stop operation for your client and server। ओके, सो ये होता है उसका डिसएडवांटेज किसका, सेलेनियम वर्जन 2 और 2.0 दैट इज आरसी। सो अगेन आफ्टर सम टाइम्स ये भी क्या कर दिया लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। सो नाउ इन मार्केट यू विल नॉट फाइंड सेलेनियम आईडी और नॉट एनी सेलेनियम आरसी। इवन आपको भी इंट्रो में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑन सेलेनियम आईडी और सेलेनियम आरसी, so you should directly say no, I don't have any experience on this selenium id and selenium rc। okay, so now the versions which we are using is the selenium web driver, जहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग तो है ही, वी आर यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप द कोड। और यहाँ पे ये क्लाइंट और सर्वर का कंसेप्ट नहीं है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ दिस क्लाइंट एंड सर्वर। ऑटोमेटिकली वेब ड्राइवर में इसका प्रोविजनिंग है जो ऑटोमेटिकली इसका टेक केयर करेगा। देयर इज नो नीड टू स्टार्ट एंड स्टॉप द क्लाइंट सर्वर पेयर। ओके, यहाँ पे उसका करने का जरूरत नहीं है। सो अगेन इसकी वर्जन आए होंगे लाइक सेलेनियम 3.0 राइट। अगेन जैसे ही डेवलप होते हैं, जैसे आप सेलेनियम के वेबसाइट पे जाओगे है ना, जहाँ से आप सेलेनियम डाउनलोड करोगे, तो वहाँ पे यू कैन सी द वर्जन है सेलेनियम 3.0 और 3.1 और 3.1.0। ये डिफरेंट वर्जन जैसे अपडेट होंगे वैसे वो वर्जन चेंज करेंगे। ओके, करंटली इन मार्केट वी विल हैव द सेलेनियम 4.0 और 4.1। जो भी आपको स्टेबल लगेगा आज पर आवर कॉन्फ़िगरेशन वी कैन यूज दैट वर्जन। ओके, नो वरी, मैं बताऊंगा आपको कि ये इंस्टॉल वगैरह कैसे करना है। डोंट गेट bothered about it। okay, so we are using this selenium web driver for our software testing also। okay, ये एब्सोल्यूट हो चुका है, it's outdated, it's also outdated। now this selenium grid means what? अगर आपके ऑटोमेशन आपको मल्टीपल सिस्टम पर या फिर मल्टीपल ब्राउजर पर ओके एक साथ अगर रन करने हैं तो हम सेलेनियम ग्रिड यूज करते हैं। ओके, सो मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए आपके पास एक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है मैक। ओके, वन इज व्हाट द लिनक्स। ओके, वन इज व्हाट द लिनक्स। नाउ हियर you are using the Chrome। okay, here also you are using Edge, here you are using Firefox मान लीजिए। again all these three browser you have installed in Mac and in Linux service। अब आपको इन सब पे टेस्टिंग करनी है, so you cannot go and automation or like execute the script on this browser on Windows system then stop, उसके बाद एज, उसके बाद फायरफॉक्स। ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इट विल कंज्यूम टाइम। सो इन सेलेनियम ग्रिड वी विल हैव सम नोड्स। ओके, नोड्स मतलब एक सिस्टम जिसपे विंडो है और क्रोम है, उसको मैं एक नोड मानता हूँ। अगेन सेकंड नोड जिसपे विंडोज है और एज है, वो मैं सेकंड नोड मानता हूँ। तो ऐसे मल्टीपल नोड। सो यहाँ पे मान लीजिए कि 9 नोड वी आर गेटिंग, राइट, 3 into 3 वी आर गेटिंग द 9 नोड्स। सो मैं सेलेनियम ग्रिड का यूज करके एक ही समय पे अलग अलग नोड पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ओके, मतलब मेरे लैपटॉप में या मेरे सिस्टम पे मुझे 9 सिस्टम दिखाई देंगे, जिसको हम कहते हैं कि वर्चुअल डेस्कटॉप। एक्चुअली आपके लैपटॉप में एक ही आपके पास लैपटॉप, बट आपको वर्चुअली 9 लैपटॉप क्रिएट करके देगा एक सिस्टम। 9 लैपटॉप या फिर 9 सिस्टम जिसको कह दीजिए। और वो 9 सिस्टम पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो कोड रन करना पड़ेगा और वो इंडिविजुअली रन होगा एट सेम टाइम। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन वन टाइम, इट विल रन ऑन नोड 1, नोड 2, नोड 3 अप टू व्हाटएवर नोड यू हैव स्पेसिफाइड, और एट द लास्ट इट विल गिव द रिजल्ट ऑन ईच एंड एवरी नोड। दैट मीन्स आपने क्या कर लिया एक टाइम पे ही,
अलग अलग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे आपने क्या कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, दैट्स कम्स अंडर द सेलेनियम ग्रिड। बट वो लेटर पार्ट है, एंड जनरली टेस्टिंग में भी आप देखोगे तो कंपनी इतने ऑप्शंस नहीं रखते है ना कि मुझे इतने सिस्टम पे यूज करने, एंड इवन दे कैन नॉट प्रेफर 9 टेस्टर्स टू एग्जीक्यूट 9 नोड्स। ओके, सो सिंपली वो एक या दो ब्राउजर को टेस्ट करना चाहेंगे, दैट टू नॉट इन फुल मोड। कोई तो एक ब्राउजर पे वो ट्राई करेंगे कि सक्सेसफुल लॉग इन लॉग आउट होता है कि नहीं, बेसिक टेस्ट केसेस और स्मोक टेस्ट केसेस, बट रिमेनिंग ऑल फंक्शनल एंड रिग्रेशन वी विल ट्राई टू कंप्लीट ऑन सिंगल ब्राउजर। सो सेलेनियम ग्रिड भी ये काफी सिलेक्टेड प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, नॉट ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट विल यूज दिस टेस्टिंग। इसमें किसी को डाउट है इन ऑल दीज 4 कंपोनेंट? तो ग्रिड क्यों यूज नहीं होता मतलब? देखिए, आपके अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि क्लाइंट ने कहा कि मेरा जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है वो मुझे हर सिस्टम पे रन होना चाहिए, ओके, और मुझे उसके टेस्ट प्रूफ भी चाहिए, आई वांट द टेस्ट प्रूफ आल्सो। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, आपके पास अगर 9 टेस्टर है तो आप एक टेस्टर करेगा विंडोज के क्रोम ब्राउजर से टेस्ट करेगा, ओके, एंड वी आर हैविंग 1000 टेस्ट केसेस, तो उसको 1000 टेस्ट केस उस स्प्रिंट में कवर करने हैं क्रोम पे। दूसरे टेस्टर को एज ब्राउजर यूज करके करना पड़ेगा, तीसरे टेस्टर को फायरफॉक्स। ये तो हुआ विंडोज पे। सेम कोई मैक सिस्टम होगी तो मैक को करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी के पास लिनक्स होगा तो लिनक्स पे भी करेगा। सो इतना टाइम और इतना इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करना है तो सिंपली सम बिजनेस विल नॉट आस्क अबाउट दिस व्हाट द क्रॉस टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टेस्टिंग को नहीं डिमांड करेंगे, तो हम तब उस टाइम ग्रिड यूज नहीं करेंगे। बट व्हेन स्पेसिफिक क्लाइंट की अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होगी एज पर द बिजनेस एग्रीमेंट, तब हम सेलेनियम ग्रिड यूज करते हैं। और जनरली ये मैक्सिमम 99% प्रोजेक्ट में ये रिक्वायरमेंट नहीं होते, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द ग्रिड। ओके, डाउट क्लियर हुआ? यस सर। So we have selected a tool as Selenium. We will learn the Selenium WebDriver. इसमें किसी को डाउट है? So voice breaker. For all? सभी के लिए आवाज क्लियर है मेरी? Is it okay? Yes, it is okay. Yes sir. Yes. Okay sir. Okay. चलो, तो अब हमको स्टार्ट करना है, समझ लीजिए, ऑटोमेशन। तो आपकी सबसे क्या करना पड़ेगा पहले स्टार्ट? लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, नॉट द एक्चुअल प्रैक्टिस। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? Programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। अगेन, Sir, we need to test case, ready the test case. वेरी गुड, आपको टेस्ट केस लगेंगे, ओके। Understanding the functionality of the. ओके, दैट मीन्स यू नीड एप्लीकेशन इटसेल्फ, राइट? तभी तो आपको फंक्शनलिटी पता चलेगी, ओके। ओके, नाउ लिसन, आई एम नॉट फॉलोइंग द कन्वेंशनल वे, ओके। जैसे कि आपको पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट सिखाऊंगा और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्क्रिप्ट डेवलप करते हैं। नो, डोंट वरी, आपको लैंग्वेज का भी हर पार्ट जो रिक्वायर्ड है वो सब पढ़ाया जाएगा, ओके। हियर आई हैव सम डिफरेंट अप्रोच टू स्टार्ट द ऑटोमेशन, ओके। First, we will see some basics to start automation, okay? Then मैं सिखाऊंगा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। अब यहाँ पे कोई कोडिंग पार्ट नहीं है ना, जो मैं बेसिक कह रहा हूँ, बेसिक टू स्टार्ट द ऑटोमेशन, यहाँ पे कोई कोडिंग पार्ट नहीं है, बिकॉज आप कहोगे सर हमको लैंग्वेज आपने पढ़ाई नहीं तो यहाँ पे कोडिंग कैसे पढ़ा रहे हो, राइट? So here we will have some basic understanding, or it's very important.
देन आपको रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितना पोर्शन है जावा का वो मैं पढ़ाऊंगा. देन अगेन विल स्टार्ट विथ अगेन दी complete automation script development. Okay, so we'll start with the basic to the automation. Okay, उसके लिए आपको लगेगा application test cases, that is okay. I will tell you like how to get it and how to do it, don't worry. अब मेरा टूल फाइनलाइज हो चुका है सेलेनियम वेब ड्राइवर. ओके, आई एम यूजिंग द सेलेनियम वेब ड्राइवर. अब ये एक टूल है, इसको मुझे इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे एंड इट इज नॉट एक्सेप्टिंग द ह्यूमन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज. उसको चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, तो आप कहोगे कि सर हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द जावा. बट बिफोर दैट आई विल गिव यू सम बेसिक टू गेट द ऑटोमेशन. देखिए, आपके पास कोई भी जब एप्लीकेशन होता है, आप उसको अगर मैन्युअल टेस्ट केस लिखते हो तो अल्टीमेटली आपने क्या किया था, लोगो पे क्लिक किया होगा, राइट? यू हैव क्लिक्ड ऑन बटन्स, यू हैव क्लिक्ड ऑन एनीथिंग व्हिच यू आर गेटिंग ऑन द वेब पेज. आपको जो भी दिख रहा था, मे बी इट मे बी द ऑप्शंस, ओके, व्हाट एवर इट मे बी, लाइक फर्नीचर. आपने कहीं पे कुछ तो क्लिक किया होगा, यू आर गोइंग टू गेट द ऑप्शंस, राइट? अब जब मैं ऑटोमेशन स्टार्ट करूंगा तो इन सभी चीजों को मैं कहूंगा एलिमेंट और ऑब्जेक्ट. आई विल नॉट से डायरेक्टली द बटन्स, सर्च बॉक्स, ऐसा नहीं कहूंगा. ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग आई विल से इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग फंक्शनलिटी ऑफ व्हाट, सर्च बॉक्स. बट जनरली मैं इसको एलिमेंट कहूंगा. ओके, आई विल से दिस एज एन एलिमेंट. अब मुझे इंस्ट्रक्शन देना है आपके टूल को. ओके, go on this login button and click on it. अब ये सब इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा कहाँ से? थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थ्रू जावा, थ्रू कोड, राइट? बट बिफोर दैट मुझे ये तो पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट है कहाँ पे, वेयर द एलिमेंट इज लोकेटेड एग्जैक्टली. ओके, तो एनी गेस लाइक हाउ वी कैन फाइंड कि एलिमेंट कहाँ पे लोकेट है? Inspection tools. Inspection tool, okay. 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 Now see a simple realistic example. Okay. Apart from automation, आप किसी एक हॉल में हो और वहाँ पे 100 people है, 100 people, okay, and you want to search a person with name Santosh. आप क्या करोगे? What you will do exactly? Call him. Call him. Okay, आपने कॉल किया संतोष and you find 10 peoples of name. Then डिटेल नेम सर उसका. ओके, कंप्लीट नेम आपने कॉल किया, यू गॉट 5 people. Then We should know some specification or feature of Santosh so we can decide. okay, okay, okay. You should know some specific feature. Maybe उसका लेंथ होगा, right? Yes. Color होगा, Yes. right? Looks होगा, whatever it may be. Okay. So you are going to use some properties of that person when you have number of choice. अगर एक ही है तो that's okay, you got it very easily. But if there are multiples persons, तो आप क्या करोगे? स्पेसिफिक क्या करोगे? उसकी प्रॉपर्टीज ढूंढोगे, राइट? सो अगेन देयर इज 2 ऑप्शन. अगेन यू कैन आस्क कि इस प्रॉपर्टी का पर्सन आपको कहीं पता है क्या, संतोष जिसका नाम है. अदरवाइज डायरेक्टली इफ यू फाइंड कि इस प्रॉपर्टी का ये कोई पर्सन है तो आप उसको डायरेक्टली पूछोगे आर यू संतोष, राइट? इज इट और नॉट? Yes. सेम अप्रोच आप यहाँ पे यूज कर रहे हो टू आइडेंटिफाई द वेब एलिमेंट. एक तो आपके पास वेब एलिमेंट के काफी सारे प्रॉपर्टीज होंगे, तो आप कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को उसको पहले पता करोगे. अदरवाइज यू विल आस्क द प्रॉपर्टीज
कि मुझे ये प्रॉपर्टीज का बंदा चाहिए, जैसे कि आई वांट द वेब एलिमेंट विद दिस प्रॉपर्टी, एंड टू फाइंड दिस specific web element, your best friend here is inspect. Okay, many of you might know what is inspect, और मैं बताता हूँ आपको inspect exactly होता क्या है. Okay, okay. So कोई भी वेब एलिमेंट है आपका, मान लीजिए लॉगिन बटन है, उस पर आपको माउस रखना है और राइट क्लिक करना है. यू हैव टू क्लिक राइट क्लिक. ओके, यू विल फाइंड एन ऑप्शन हियर. कैन यू सी inspect? This is the option inspect. Click on that inspect option. Okay, this will show you that web element in this HTML code. देखो, ये जो highlighted part है, ये बता रहा है आपको login. At the same time, login is also highlighted in your web page. You can see. Are you getting it? Yes. Okay, that means ये आपका एलिमेंट HTML में यहाँ पे लोकेटेड है. ओके, सो आपको कोई वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट, या हम उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट. एवरीथिंग ऑन द वेब पेज इज वेब एलिमेंट और ऑब्जेक्ट. एवरीथिंग, इमेज, पैराग्राफ, वर्ड, बटन्स, चेकबॉक्स, व्हाट एवर इट मे बी, जो भी है, हम उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट. ओके, वी विल मेक द लिस्ट. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? एनी टेक्स्ट, एनी इमेज, एनी बटन्स, एनी चेकबॉक्स, और क्या होता है, व्हाट यू कैन सी, एनी ड्रॉप डाउन, एनी चेकबॉक्स, रेडियो बटन, एनी रेडियो बटन, लिस्ट सर, एनी लिस्ट, एनी टेबल, सर्च बॉक्स, any paragraph, yeah, Any text. yeah, I have called it. Any paragraph, again what one told. Okay, so That भी होते हैं ना सर वो. जितने भी आपको पॉसिबलिटीज बनाने हैं, that all included as a object or element, मान लीजिए. Okay, so to work with this object and element, we have the concept of locators. आपको उनको locate करना है. Okay, locators. So while dealing with Selenium, we have 8 types of locator. Okay, 8 टाइप के लोकेटर है. First one is what? ID, then name, then class, then XPath, then CSS, then tag name, then link text, and then partial link text. Okay, these are the 8 locators we are going to use. Why there is 8 locators if we can do with the ID itself? ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? 8 टाइप के लोकेटर्स क्यों बनाए होंगे? आपका अननेसेसरी वर्क क्यों बढ़ाया उन्होंने? हर एक लोकेटर का सर फंक्शन अलग अलग होगा, मतलब. बट अल्टीमेटली एम क्या है? लोकेट करना ही होगा ना. यस. तो मेरा तो फंक्शन, मुझे क्या चाहिए अल्टीमेटली, वेब एलिमेंट लोकेट हुआ हो चाहिए. तो हर आपका जो है वो तो वेब एलिमेंट ही लोकेट करता है, उसका फंक्शन कोई और नहीं है. या एनी गेस? Some element have same IDs. ओके, ओके, वेरी गुड. और कोई गेस? सो उसका इंटरनली लोकेटर्स टूल्स चेंज होते हुए वैसे चेंज होता होंगे शायद. नहीं, लोकेटर्स चेंज नहीं, मतलब जो HTML कोड है वो चेंज नहीं होगा दोस्त. देखिए क्या होता है कि आप
अगर आईडी से ट्राई कर रहे हो, आपको आईडी नाम का कुछ फील्ड है ही नहीं उस HTML कोड में, तो यू कैन नॉट यूज दैट लोकेटर्स। तो आप नहीं बोल सकते ना कि मैं वो वेब एलिमेंट को लोकेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपकी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रुक जाएगी। देन यू कैन सम अदर type like name, class. That's why they have provided the number of locators, 8. And 100% using this, any one of this, at least एक लोकेटर से तो आपका वेब एलिमेंट लोकेट होना ही है। ओके, इट्स नॉट कि सर मैंने 8 भी यूज कर लिए बट मुझे वो वेब एलिमेंट नहीं मिला। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये जो पहले 3 है आपके, आईडी, क्लास एंड नेम, all these are easily find by a very best friend of Selenium. क्या है Selenium का बेस्ट फ्रेंड? This HTML code itself, okay, this is the best friend of Selenium. आपको HTML कोड से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, अब आप जब देखोगे HTML कोड, इट्स अगेन वन लैंग्वेज, ओके, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब आपको ये डेवलप नहीं करनी है और आपको ये पढ़ना भी नहीं है। यू डोंट वांट टू रीड ईच एंड एवरी लाइन। सो अगेन इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको HTML कोड क्या होता है वो पढ़ाऊंगा। ओके, बट आई विल गिव द बेसिक आइडिया व्हाट एग्जैक्टली द HTML इज। ओके, HTML में 3 चीजें होंगी मेनली HTML कोड में। लेस देन सिंबल होगा, ओके, जो आपको बताएगा HTML टैग के बारे में। ओके, अब थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। ओके, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही समझिए, एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं है और उसका कुछ मीनिंग भी नहीं बनेगा हमको टेस्टिंग के लिए। एक साइन होगा लेस देन साइन विच विल गिव यू द HTML टैग। ओके, ओके, देन यू विल हैव सम इक्वल टू ऑप्शन जो आपको बताएगा एट्रीब्यूट बताएगा। यू विल गेट एट्रीब्यूट। ओके, ओके, नाउ you can have the forward slash and this greater than symbol. तो ये होता है आपका closing tag. ओके, ये मान लीजिए opening tag and you can say it's HTML tag. This is your closing tag and this is your attribute. ये 3 चीजों में कोई डाउट है किसी को? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? No, sir. No, okay. Okay, we'll go here and we'll see. देखिए, at the top you can see HTML with symbol like greater than and HTML. Can you see? Yes, sir. So this is your HTML tag. Okay, this is your HTML tag. Okay. Next, you can see head is there also written like less than symbol head. It's a head tag. Okay, मैं उसके आगे जो है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. No worries. Okay, you can see here body. Okay, body is one tag. Division, one tag. You can see whenever there is a less than symbol, it's having one tag. Here also, it's division, right? Okay, तो जो भी less than symbol मुझे आ रहा है मैं उसको tag कह रहा हूँ और node बोल रहा हूँ, node. Okay, simply. Okay, then equal to symbol. देखिए यहाँ पे equal to symbol है, यहाँ पे भी equal to symbol है. Whenever you can see the equal to symbol, that will give you the attribute. Attribute मतलब equal to के left side में जो है उसको हम कहते हैं attribute और equal to के right side में जो भी है उसको हम कहते हैं value. मतलब यहाँ पे class नाम का attribute है जिसकी value है fonts dash loaded. ये उसकी value है. सिमिलरली मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, क्लास नाम का एट्रीब्यूट है और ये जो भी है इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा. इट इज द वैल्यू फॉर दैट गिवन एट्रीब्यूट और वो एट्रीब्यूट का नाम है क्लास. सो दिस इज अ सिंपल HTML कोड. अब इसमें कोई डाउट है? इसको मैंने जो चीज बताई वो पूछे पहले. इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. And closing tag, you can see the closing tag forward slash tag name and that again the closing bracket और greater than symbol. तो यहाँ पे वो tag भी close हो चुका है. open है तो कहीं ना close हो जाएगा, but वो हमको देखना नहीं है कहाँ पे close हो रहा है. we are just interested in the starting tag and these different nodes.
ये जो एरो दिख रहे हैं ना आपको, these all are the nodes. Each and every line itself we can say it as a node. यहाँ पे सिंपल बोला जाता है. ओके, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? इंस्पेक्ट एंड देन दिस. No, sir. ओके, वी आर एक्सटेंडिंग द क्लास बिकॉज आज थोड़ा लेट सेशन ज्वाइन हुआ. तो किसी को कोई इशू है? एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, no, sir. डोंट वरी. ओके, थैंक यू. ओके, तो हमको क्या करना है अभी? वेब एलिमेंट लोकेट करना है. ओके, मैंने कहा कि हम पहले 3 देखते हैं. विच वन? आईडी, नेम एंड क्लास. आईडी, नेम एंड क्लास. डेफिनेटली हम ये भी देखेंगे, बट just to understand simplicity we are following these 3 first out of 8. ओके, और उसके लिए हमको HTML कोड चाहिए, और HTML कोड में क्या देखना है वो मैंने आपको बताया. ओके, ये चीजें देखनी है. चलो, ये तो बाद में है. फर्स्ट मुझे बस HTML कोड से ये 3 चीजें काफी इजीली मिल जाएगी. वो कैसे हो मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार देखिए. ओके, okay, so can you see one page opened here? Orange HRM. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is our project for automation. जो हमने मैनुअल के लिए क्या किया था? ओपन कट किया था. पता है सभी को? Yes. Yeah. Yes, sir. For manual testing we have used application as a open cart. That is what e-commerce application, right? जहाँ पे हम purchase कर सकते हैं whatever it may be. Here we are using Orange HRM, that is a human resource platform management. Okay, यहाँ पे हम क्या करेंगे? HR मतलब जो भी पर्सन होंगे उनकी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे, whatever it may be. Simple HR solution. Okay, so this is our application. I will give you that link also. ये आपको मैं लिंक आपके नोट्स में फॉरवर्ड कर दूंगा. Okay, okay, now here we have to log in itself. देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको लॉग इन करना है और पासवर्ड देना है और क्लिक करना है. उसका लॉग इन पासवर्ड भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है. सेम केस सेंसिटिव है, आपको यही टाइप करना है और ये करना है. ओके, नाउ आई वांट टू फाइंड माय ऑटोमेशन स्क्रिप्ट. मुझे लिखनी है, बट उसके पहले मुझे बताना है उसको कि वेब एलिमेंट कौन से यूज करने हैं मुझे स्क्रिप्ट. तो पहले मुझे करना है, मान लीजिए यूजर नेम. आई वांट टू यूज द यूजर नेम. सो व्हाट आई विल डू, आई विल कम हियर, आई विल डू द राइट क्लिक. Okay, just scroll down. If you are not getting the option, you will get the option as a inspect. So I will click on the inspect. Okay, always you will get some highlighted part in HTML. जब मैं यहाँ पे यूजर नेम पे राइट क्लिक करूंगा इंस्पेक्ट के लिए, तो मुझे कुछ हाईलाइटेड पार्ट मिलेगा HTML कोड से. That will show you the HTML code related to your particular web element or object, जो है मेरा यहाँ पे यूजर नेम. अगेन what I'm doing, right click on this, click on the inspect. You will get highlighted code in the HTML to the right side, or it may be where it may be. आपके पास ये विंडो लेफ्ट में आ सकती है, ऊपर आ सकती है, नीचे आ सकती है. Its location you can adjust also. Okay, so here you are finding the code, right? अब आपको क्या ढूंढना है? ये 3 एट्रीब्यूट के ये 3 देखने हैं वहाँ पे. आईडी है, नेम है या क्लास है. ओके, now here do we have the class? Can you see the class name here? Yes. Yeah, you can see the class. उसको कोई वैल्यू है, just double click on it and copy it. Okay, come here. That was what your class name. वो आपका क्या था? क्लास नेम था. So class name is equal to value. This is your value which I have copied. Okay, next, is there any ID? Can you see there is an ID? This highlighted part? Yes or no? No, sir. No ID. There isn't. Okay, there is no ID. Means you cannot work with that, right? There is no ID मतलब आप इस लोकेटर का यूज नहीं कर पाओगे to identify the username field. Okay, leave it blank. Next, do you have name?
Yes, sir. Okay, just double click on it, copy it, come here, it will give you the name. Okay. Okay, so we are discussing first three, okay, locators, not the all. I will tell you about all these also, okay. बट ये तीन देखने हैं मुझे, आईडी, नेम और क्लास. तो एक वेब एलिमेंट मुझे चाहिए था जिसका नाम है यूजर नेम बॉक्स, राइट. तो उसके मैं तीन प्रॉपर्टी चाहता हूँ. एक तो मुझे आईडी चाहिए जिस वो अवेलेबल नहीं है, ओके. नेम चाहिए, वो अवेलेबल है, मैंने कॉपी कर दिया. क्लास चाहिए, वो अवेलेबल है, मैंने कॉपी कर दिया, ओके. नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए पासवर्ड. ओके, सो यू कैन जस्ट क्लोज दिस विंडो, come to the password, and just right click, go to inspect, okay. Again you will find some HTML code highlighted. Okay, do you have class name here? Yes. Yes, sir. Okay, I will double click on it, copy it. Now I am trying to find which the password. Okay, again ID, name and class, ये तीन फील्ड चाहिए. तो क्लास का वैल्यू है मेरे पास, मैंने क्लास का वैल्यू पेस्ट कर दिया. ओके, ओके. डू यू हैव नेम हियर in Yes. password? Here you can find the name. Just double click on it, copy it, come to your document, you have it. Okay, do you have ID here in this highlighted part? Can you see ID? No, sir. No, sir. No, that means you cannot use the ID here to locate this. Okay, keep it as blank only. Now just observe these things. Okay, क्लास नाम का जो भी प्रॉपर्टीज है उस HTML कोड से, इट लुक्स लाइक सेम, राइट? कैन यू सी? Yes. ओके, दैट मीन्स अगर आप ये इंस्ट्रक्शन दोगे आपके कोड को कि फाइंड द एलिमेंट विथ क्लास नेम एज दिस, so it will be get confused. Are you talking about the username or you are talking about the password? That means आप ये यूज नहीं कर पाओगे फॉर यूर टेस्टिंग, राइट? आईडी के पास तो आपके आईडी की चॉइस तो आपके पास है ही नहीं, देयर इज नो आईडी. बट यू कैन सी नेम इज डिफरेंट. हियर इट्स नेम इज यूजर नेम, एस इज पासवर्ड. If you are okay to find that element but by using name only, then no worry. You are good to go with your next step. Click और जो भी है उसके लिए आप कोड लिख सकते हो. अगर ये तीनों से भी नहीं हुआ है, मान लीजिए उसमें से दो प्रेजेंट नहीं है और एक कॉमन आ रहा है, then you can try with this next options that I will show you how. But first, with easy understanding, I am trying to find the properties of that web element by using these three locators as of now: ID, name and class. ओके, तो ये हो गए दो. नेक्स्ट आई हैव द लॉगिन बटन. अगेन जस्ट क्लोज दिस विंडो इफ यू डोंट वांट. लॉगिन बटन पे आइए, राइट क्लिक कीजिए एंड क्लिक ऑन इंस्पेक्ट. ओके, अगेन सम कोड विल बी हाईलाइटेड. ओके, हियर डू यू हैव क्लास? Yes, sir. Yes. We have class. Do you have ID? No, sir. No. No. Do we have name? No, sir. No. So that means only the class option is available. Just double click on it, copy that. Now you want properties, web element properties for what? Login button. Right? So it has only the class. Just copy that value here. That's it. Okay? इसमें किसी को डाउट है? How I am going to find these three properties from the HTML code? No. Okay. So we'll log in just to see what is the UI. So this is a dashboard of your application. Okay, it's simply the HR solution. मतलब जो भी पर्सन है उसका अटेंडेंस, उसकी सैलरी, उसके डिटेल्स,
एक ये सॉफ्टवेयर में स्टोर करते हैं. ओके, इट्स अगेन ह्यूज सॉफ्टवेयर एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू विथ ऑल द मॉड्यूल्स. अब हमको इसमें से सभी मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं है. ओके, some specific modules we can pick and we can do the automation, right? ये है आपका हमारा अप्रोच होगा इसमें. अब यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे we are having the number of option on UI also. मान लीजिए मुझे चाहिए PIM, ये ऑप्शन है, ये चाहिए. Right click on it, click on inspect, again you will find some HTML code highlighted. Okay, here do we have class? We have class value, right? Yes. Do you have ID for this? No. Sorry. यहाँ पे ID है? नहीं है. Is there any name? There is no name. So what you can just copy? You can just copy the class value itself to find. तो आपको टास्क क्या होगा कि सिंपल लॉगिन और लॉग आउट के लिए तो एटलीस्ट आप क्या करिए, ये तीनों यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पे है, मतलब आपको ड्रॉप डाउन में जाना होगा. सो अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इंस्पेक्ट, इट इज अ ड्रॉप डाउन. सो अगेन यू विल फाइंड द ड्रॉप डाउन के लिए भी क्या है, क्लास अवेलेबल है. इन क्लास नेम इज यू कैन सी ऑक्स डॉट यूजर ड्रॉप डाउन डॉट नेम. देयर इज अ क्लास अवेलेबल, राइट? सो यू कैन यूज दैट क्लास and then you are having logout. So again if you click on this logout, you will have to right click, inspect, and for logout also what are the properties in terms of ID, class name, वो कॉपी कर लीजिए. ओके, यहाँ पे देखो ID नहीं है, नेम नहीं, you are getting class name, that is aux dash user drop down link, what it may be. Okay, so आपको क्या करना है, एटलीस्ट बेसिक्स जो लॉगिन और लॉगआउट के लिए जरूरी है उन वेब एलिमेंट के आईडी, क्लास और नेम फाइंड करना है. एंड हाउ यू हैव टू डू इट, आपको क्या करना है, सिंपल यू हैव टू मेक वन एक्सेल शीट. ओके, यू हैव टू प्रिपेयर वन एक्सेल शीट in which simple you have to give the object name. आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, you have to prepare one object name, then we are going to find it by ID, by name, by class. Okay, यहाँ पे उसका नाम लिख लिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग यूजर नेम बॉक्स, यहाँ पे नाम लिखिए उस एलिमेंट का, आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग है. Here it's a password box. Okay, here it is login button. Okay, here whatever it may be, you can continue and just try and paste the values for ID, name and class. If you don't find, keep it blank, no worries. बट आपको एटलीस्ट 10 से 12 एलिमेंट, एनी रैंडम एलिमेंट यू कैन पिक, एटलीस्ट बेसिक कवर कर लीजिए, यूजर नेम, पासवर्ड, लॉग इन, लॉग आउट के लिए. And after that any 5 to 6 element try to find by these options. Okay, in this application. इसमें किसी को कोई डाउट है? No sir. No sir. Can you do it? Yes sir. देखिए, now this time मैं आपसे कोई आपकी एक्सेल शीट नहीं मांगूंगा और वो कोई वेरीफाई नहीं करूंगा. ओके, नेक्स्ट टाइम मैं जब इससे कंटिन्यू करूंगा फॉर अदर लोकेटर्स और इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे पूछेंगे, प्रोवाइडेड कि उन्होंने ऑलरेडी ये टास्क कंप्लीट किया होगा. ओके, इफ यू आर नॉट डूइंग एनी टास्क बाय योर ओन एंड यू विल ट्राई टू आस्क सम क्वेश्चन, तो उसमें डेफिनेटली 1000 डाउट्स होंगे. जिसने किया है उसके 10 डाउट्स होंगे बस. सो we don't have the time to again explain all 1000 doubts अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो. ओके, वो वेस्ट होता है, एक टाइम, एक बंदे का टाइम नहीं, पूरे क्लास का टाइम वेस्ट होगा. सो बेटर जितना भी असाइनमेंट में डेली कहता हूँ उतना प्लीज कीजिए. ओके, एंड दिस इज ऑटोमेशन. अगर आपको फर्स्ट असाइनमेंट में ही दिक्कत है तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट असाइनमेंट में भी आपको प्रॉब्लम आएंगे. ओके, एंड आई एम नॉट गिविंग द ह्यूज टास्क कि आपको पूरे प्रोजेक्ट के वेब एलिमेंट फाइंड करने को नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, जस्ट लिमिटेड, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस एंड दैट टू रैंडम. फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना है कि सर मैं कंफ्यूज हो गया था कि उसमें से कौन सा पार्ट का वेब एलिमेंट लेना है. ओके, आई एम सेइंग एनी रैंडम वेब एलिमेंट, बस उसका नाम करेक्ट लिख दीजिए. ओके,
यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नेम है ना वो करेक्ट लिख लीजिए एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सी द पीआईएम मॉड्यूल, यू कैन सी द पीआईएम मॉड्यूल फ्रॉम द मेनू। लिखिए, आपको सेंटेंस में लिखना है, लिखिए, नो वरीज। आपको पता होना चाहिए एट द लास्ट ये शीट आप यूज करोगे। ओके, तो उसका आईडी, नेम, क्लास, ये वैल्यूज आपको एचटीएमएल कोड से लिखना है। ओके, अगेन इट्स वेरी सिंपल, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट। आपको अगर कोई प्रॉपर्टी चाहिए दोस्त तो उसको कॉपी कैसे करना है, आपको डबल क्लिक करना है, उस पे डबल क्लिक करना है। इट विल टेक ऑल द डेटा इनसाइड द डबल कोट। आप अगर ट्राई करोगे ऐसा कॉपी पेस्ट करने का तो आपका ई रह जाएगा या कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। ओके, एंड इट विल थ्रो एन एरर। इसमें से ई भी मिस होता है एक्टिव में से, तो ये आपका एरर होगा उस एलिमेंट लोकेट करने के लिए। ओके, in script it will find an error and it will throw like no such object present. So that's why simple, go there and just click on that. It will automatically copy all this, it will automatically highlight, then control C, copy this and paste in your excel. Got it? इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. Definitely, no doubt. सर उसमें लॉगिन और लॉग आउट का दोनों का ही लिखना है ना सर, नेम और आईडी, नेम, क्लास। आज का टास्क आज का टास्क है आपको यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, और इस पेज पे और एक है जैसे फॉरगॉट पासवर्ड मान लीजिए, राइट? फॉरगॉट पासवर्ड, लॉगिन करने के बाद लॉग आउट के लिए भी जो भी जितने भी बटन रिक्वायर्ड है उनके एलिमेंट, और एनी 5 to 10 रैंडम एलिमेंट। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको डैशबोर्ड दिखेगा, उस डैशबोर्ड पे काफी सारे ऑप्शंस हैं। किसी भी रैंडम 10 ऑप्शंस के आप क्या कर दीजिए, 3 वेब लोकेटर से मुझे डिटेल उस एक्सेल शीट में रखिए। ओके, गॉट इट? यस सर। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट गो फॉर द रिमेनिंग वन। आपको पता भी होगा तो वो स्टार्ट मत कीजिए प्लीज अभी। यू जस्ट स्टार्ट विद दिस फर्स्ट बेसिक्स, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आईडी है तो उसकी वैल्यू आएगी, नहीं है तो ब्लैंक रखिए। नेम है तो उसका वैल्यू आने दीजिए। दो यू आर फाइंडिंग कॉमन क्लास नेम, डोंट वरी, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट, लाइक मेक दैट रिकॉर्ड। सर वहां पे मुझे रिपीट दिखा इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया। आई डोंट वांट दिस रीजन एज वेल। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन आपको आईडी, नेम, क्लास के लिए मिलती है वो आप सफिशिएंट उसको स्टोर कीजिए आपकी एक्सेल शीट। ओके, एनी डाउट इन दिस?